जस हिंदी देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपका स्वागत प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मैं आपकी होस्ट आश्मिता। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सीरियस एंड बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम लेके आए हैं जहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ की बात आती है। एक रीजन दुनिया में पिछले कितनी आप कह सकते हैं डेकेड से सफ़र कर रहा है, एंड आज उनकी हम ना सिर्फ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, बट वी गेट टू हियर फ्रॉम समवन हु इज़ पर्सनली बिन इम्पैक्टेड बाय दिस सिचुएशन। मैं बात कर रही हूँ जो सिचुएशन डेवलप हो रही है चाइना के नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में, इन एन एरिया नोन एज ईस्ट तुर्किस्तान। आप मैप देख सकते हैं। ये रीजन में जो मजॉरिटी पॉपुलेशन जो हिस्टोरिकली वहाँ रहते आए हैं, जो वीगर्स से नाम से जाने जाते हैं, ओरिजिनली इनकी वहाँ पे गिनती कुछ 11 मिलियन के करीब थी, बट रिसेंटली काफ़ी बड़ी तादाद में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के इस पॉपुलेशन के ख़िलाफ़ एक्शंस रहे हैं, वो वर्ल्ड स्टेज पे ज़रूर पहुँचे हैं, बट उनको वो अटेंशन नहीं मिली जितनी आज की डेट में ज़रूरत है। इस ग्रुप, इस पॉपुलेशन को लेके वीगर्स काफ़ी प्रोटेस्ट दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह इस पॉपुलेशन की एक तरह से एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है, apparently by the Chinese government. Reports say that Chinese government ने about 1 million Uyghurs को as well as members from other Muslim minority groups detain करके रखा हुआ है in internment camps, and these estimates are from the US State Department. Once again, there's some protests that are taking place around the world, and in fact there's one particular organization, Campaign for Uyghurs, जो इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे advocacy कर रही है. Today we have a panel जो इस चीज़ पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं. First, I would like to introduce Miss Rushan Abbas, the founder and executive director for Campaign for Uyghurs. Also joining us is Mr. Sukhi Chal, founder, CEO, and chairman of Punjab Foundation. I'd love to welcome you both to the program. Welcome. Good to have you both. Ms. Abbas, I'd like to start with you. Your sister went missing in China just about 2 years ago. Gulshan Abbas, a retired medical doctor, was declared or found missing. And in your opinion, this was a retaliatory act for some specific actions that you took, for some statements that you made. Let's start with your personal story before we get into what's happening on a large scale level in East Turkestan, where you were born, your home is there, although you've been living in the United States for so long. Tell us what happened with your sister. Since the beginning of 2017, the Chinese government started to massively populate the concentration camps in our homeland. Mm-hmm. So I have been being very vocal about this. And then by like a summer of 2017, my husband's entire family were missing. And then on September 2018, I took a part of a panel discussion at one of the think tanks in Washington, D.C., Hudson Institute. And I talked about the conditions of those concentration camps and the fate of my in-laws, and talked about the genocidal actions by the Chinese government that's conducting against the Uyghur people in East Turkestan. 6 days after I spoke on the panel, my sister and my aunt, they both got abducted on the same day as a retaliation for my activism here in America as an American citizen, exercising my my right under my constitution. So my sister and my aunt, they live about 900 miles, 1,400 kilometers away from each other. My sister lives in capital city Urumqi. My aunt lives in a place
named Atush near Kashgar. So they both got picked up same day, 6 days after my speech. That's why I believe that they became victims for my activism in America. But I have been very vocal about it. I wrote opinion pieces and I have been speaking publicly, being very active in social media. So they released my aunt about 3, 4 months later, but they kept my sister. For almost 2 years now, there is absolutely no information on my sister's whereabouts. So, coming to this activism, so this area specifically, East Turkestan, is one that is geographically of strategic importance to Beijing. It's essentially China's gateway to Central Asia. It borders Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, as well as Mongolia, Russia to the north, and Pakistan and India to the south. So this is a very important territory. Mr. Chal, I'd like to go to you now. You are someone who does get involved when human rights violations take place. You are now involved with this campaign. I want you to tell our viewers, जिनको नहीं थोड़ा बहुत पता, आप हिंदी में शायद अच्छे से बता सकते हैं कि what exactly is going on right now in East Turkestan? जैसे अश्मिता जी आपने बताया ना, क्योंकि जो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जेनोसाइड की बात करते हैं, ये दोनों चीज़ें बड़े हाई लेवल पे आजकल चाइना में हो रही हैं, इस कम्युनिटी के साथ हो रही हैं, उइगर कम्युनिटी के साथ हो रही हैं. इनका वायलेशन हो रहा है. मोर देन ऑलमोस्ट लाइक व्हाट आई हर्ड एक्चुअली, सो मोर देन 3 मिलियन से ज़्यादा लोग पकड़कर उनको कंसंट्रेशन कैंपों में, जिनको हम जेल कहते हैं, जेल में बिठाया हुआ है, उनको पकड़ा हुआ है, उसको एज ए स्लेव की तरह यूज़ किया जा रहा है. उनकी औरतों के साथ रेप हो रहे हैं, औरतों की ज़बरदस्ती उनका जो बर्थ कंट्रोल के लिए उनको वो सारा कुछ उनके जो अत्याचार हो रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वो चाइना में आजकल हो रही है. अनफॉर्चुनेटली आजकल देखो, इस ज़माने में हम कहते थे यूएस के साथ पहले होलोकॉस्ट में ऐसे जब हुआ उस समय कम्युनिकेशन गैप था, लोगों को पता नहीं चलता था. आजकल देखो, हम हमारे सामने इस इंटरनेट की दुनिया के सामने, सोशल मीडिया के दौरान इस जगह पे, इस दुनिया पे हमारे सामने इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है. इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में जरूर आवाज़ उठानी चाहिए. और चाइना की गवर्नमेंट, जो चाइनी गवर्नमेंट है, उसके द्वारा जो इन लोगों का, निर्दोष लोगों को पकड़कर उनका अत्याचार, उनके बच्चों पे, उनकी औरतों पे, उनके लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में उन लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है. इसलिए जो रुशान जी बात कर रहे हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे. जी, Ms. Abbas, I'd like to come back to you. This area, while geographically very strategic, of course, that's not the reason that's been given for this action by the Chinese government, the setup of these camps. Their side of the messaging has been that it's to eradicate extremist Muslim factions. But I want to ask you, can the Uyghur population, which is a Muslim population today in East Turkestan, practice their Islamic faith freely? Not at all. Even just saying Salam Alaikum, which is greeting in Muslim way, and most peaceful greeting means, the Arabic word translates to peace be with you. Even that's being outlawed. You cannot even use a word Salam Alaikum to greet each other. The China is labeling those Uyghurs in the concentration camps, the radicalized the Uyghur Muslims. In reality, what are they being radicalized with or being charged with? Or when Chinese government is saying illegal religious activities, what are they? Basically, you saying you are Muslim, that can get you there. You refusing to eat pork or drinking alcohol, or fasting during Ramadan, or just praying. Those are just the basic normal practice in Islam. But the Chinese government is outlawing all of them and labeling Uyghurs as extremists. So
everything they are saying, the Chinese government is saying right now, they are the vocational training centers, or they are radicalized Muslims. They're all lies. It's just the Chinese false propaganda, false narratives, and disinformation. My sister is a medical doctor. She speaks fluent Chinese, and she's not the radicalized person. So she doesn't need to be in the concentration camps. And also, hundreds and thousands of Uyghur intellectuals, famous writers, university presidents, professors, famous singers, successful businessmen, almost everybody who can be the leader or voice for Uyghur people. And even CNN, when did a report on the Ambassador Cui, who is the Chinese ambassador to United States, he's sitting here in Washington. He shamelessly told the CNN, if you Google, you will find this. He said, by those re-education camps, we are trying to make Uyghurs normal persons. Imagine that. Right. Uyghurs are labeled as abnormal commodity because we have our own language, we have our unique ethnic culture, and we believe in Islam. Right. In a Chinese chauvinistic nationalism, they view us as abnormal people. Right. Ms. Rushan Abbas, Mr. Sukhi Chahal, we're going to stop for a quick break here. Don't go anywhere. दर्शक आप भी हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही बने रहें. ब्रेक के बाद कन्वर्सेशन जारी रहेगी. Welcome back from the break. आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक. बात हो रही है एक रीजन की इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना. आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. ये रीजन नोन एज ईस्ट टर्किस्तान, home to roughly 11 million Uyghurs जो मुस्लिम यहाँ के फेथ को प्रैक्टिस करते हैं, बट इस रीजन में उनकी जड़ें हैं. उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट जिस तरह ट्रीट कर रही है, जिस तरह के उनके हालात बन गए, जिस तरह की उनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, उन पे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं once again our guests, the founder and executive director of Campaign for Uyghurs, Ms. Rushan Abbas, and Mr. Sukhi Chahal, CEO and founder of Punjab Foundation. I want to welcome you both back from the break. Ms. Abbas, you kind of walked our viewers a little bit through what your personal, what's at stake for you personally here. Your sister, a retired medical doctor, went missing almost 2 years ago, believed to be held in one of these so-called vocational camps that transform through education. But what exactly are these camps looking to transform is the subject of our discussion today. Ms. Abbas, tell us in, as much detail as you feel comfortable, what exactly is taking place in these camps in East Turkestan, and what's happening with the average Uyghur today? The people are in the camps, according to witnesses who has been released, the former detainees from those camps. Those inmates are subject to mental and physical torture, very intense indoctrinations, and subject to rape, forced sterilizations. The women are given unknown medications that's basically stopping their menstruating, and they are also subject to food and sleep deprivations, dehydrations, poor hygiene, overcrowded rooms. So basically, if you think about the Holocaust, that's what's happening. The modern day Holocaust, what the Chinese government is doing today in our homeland is genocide. Today, our organization Campaign for Uyghurs, we just released a new report entitled Genocide in East Turkestan. And this report, basically, it outlines the facts of how China's actions today to destroy the Uyghurs
not just culturally but physically. It's met the conditions of the genocide described by Geneva Convention on the acts of genocide. Um, According to, this is not something that I'm talking about as an Uyghur. According to Chinese data, Chinese documents, Chinese medical, Chinese media, um, the Han Chinese men are sent to Uyghur homes to live in their houses. Imagine that. 1.1 million Han Chinese were sent to Uyghur homes, according to the Chinese state media reports, under the name of a double relatives program. And most of men are taken now to the concentration camps or to forced labor facilities to work as slaves. Those women left inside of their houses, now they are being subject to sexual abuses. And our children, the Uyghur children, are taken to government-run orphanages. About 6-7 months ago, in December 2019, one of the Chinese officials announced that those people in the so-called re-education or vocational training centers are graduated. Well, where did they graduate to? Because we still don't have any information on our loved ones. There are more than 1 million Uyghurs in diaspora. Every one of them missing several family members from their home. Like my husband's entire family is missing. His parents, his 3 sisters, 3 brother-in-laws, his brother and his sister-in-law. His entire family is missing. But when the Chinese officials announced that the Uyghurs are being released, if we still don't know where they are, where did they release to? Then the Australian think tank, Australian Strategic Policy Institute, released a report. The name of the report is Uyghurs for Sale. Yes, you heard me right. Those Uyghur people were basically sold by person to 83 name brand companies as a supply chain laborers. This is modern day slavery. There is no any other word to describe that. सुखी जी, आई रिक्वेस्ट दैट आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बहुत जो मिस अब्बास ने अभी कहा है ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में. ऑल्सो स्पेसिफिकली अगर आप हमें बता सकते हैं कि ये डबल रिलेटिव्स का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड जो इन्होंने अभी बहुत ही बड़ी रेवलेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है, दिस Uyghur for sale रिपोर्ट, इन दोनों चीज़ों के बारे में प्लीज़ सुखी जी. हाँ जी, हाँ, ये अश्मिता जी बहुत ही नाजुक बड़ा सेंसिटिव जो इशू और सब्जेक्ट है, जो डबल रिलेटिव का जो रुशान जी बता रहे हैं. जैसे जिन लोगों को मिलियंस ऑफ जो उनके घर के जो लोग थे उनको पकड़कर कंसंट्रेशन कैंपों में जेल में डाल दिया. उसके पीछे जो फैमिली थी, उसकी वाइफ थी या उसके बच्चे थे, उनके साथ रहने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने लोग भेज दिए उनके घरों में. वो लोग उनके घरों में रहते हैं. इमेजिन कि जैसे रुशान जी कह रहे हैं, मोर देन 1 मिलियन आदमी लोग इन लोगों के घरों में रहते हैं और उनके साथ ये जो हमारा बेड भी है ना उनका, वो शेयर करते हैं उनकी लेडीज के साथ. नाउ उनसे क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप इन द हिस्ट्री टुडे, क्योंकि जो चाइनीज गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रमोटेड है, क्योंकि उनके जो आदमी हैं, जो उनकी पार्टी के आदमी हैं, जो ईगर की जो लेडीज के साथ घरों में रहते हैं ना, तो ऑब्वियसली सो उनके साथ कोई बाहर का आदमी रहेगा तो क्या करेगा. इट इज वेरी क्लियर. दूसरी बात, वो जो इनका जो बोल रहे थे ना ईगर फॉर सेल, उसकी फ्यू डेज बैक एक्चुअली, सो वहाँ MIT का एक वेरी प्रोमिनेंट प्रोफेसर है लेडी एंड शी इज आल्सो वीगर. उसने बताया था कि देयर इज ए बिग टाइम सेल गोइंग ऑन एक्चुअली, सो स्पेशली जो उनके ऑर्गन सेल, जो मिलियंस ऑफ लोग वहाँ हैं उनके सारे का ब्लड सैंपल ले रही है चाइनीज गवर्नमेंट हाईएस्ट लेवल पे. हर एक वीगर का ब्लड सैंपल लेने का इसीलिए आइडिया है
कि अगर कोई उसके दौरान उसके एक बार आपके पास उसका डीएनए आ गया ब्लड सैंपल के थ्रू, so now they can match that DNA with anybody who need that organ. So that's why this is going to be one of the biggest organ market actually in the world, जो आजकल हमारे सामने जो हिस्ट्री में हो रहा है, ये दिस इज द क्लियरली बिगेस्ट वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। और उसके थ्रू जो आजकल जो रेप हो रहे हैं, उसको जो चाइनीज गवर्नमेंट है जो प्रमोट कर रही है, इनको सप्रेस करने के लिए, इनको दबाने के लिए इस कम्युनिटी को, उनको जैसे इवन के जो पहले आपका जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो मुस्लिम फेथ की बात कर रहे थे, कभी भी उसकी मास्क में कोई किसी की पिक्चर नहीं होती दुनिया में। उन लोगों ने इस एरिया में जो इनका प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उसकी पिक्चर लगाई हुई है, और कुरान के जो अर्थ भी हैं वो भी वो चेंज किए हुए हैं। जो रुशान जी से हम पूछ सकते हैं भी उसके कुरान जी एज इट इज वो पढ़ सकते हैं, या उसके शब्द भी चेंज किए हुए हैं। जी जी मिस्टर सुखीचाल, मिस रुशान अब्बास, we'll stop for another quick break here, don't go anywhere viewers, आप भी हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहें। ब्रेक के बाद कन्वर्सेशन जारी रहेगी कि क्यों ये एथनिक क्लेंजिंग हो रही है ईस्ट टर्किस्तान में इस पॉपुलेशन के साथ, आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में बात हो रही है उइगर पॉपुलेशन की, जो चाइना के ईस्ट टर्किस्तान रीजन में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के विक्टिम्स बन चुके हैं। तो क्यों ये बात वर्ल्ड स्टेज पे एक बड़े लेवल पे नहीं हो रही, इसके बारे में पूछेंगे हमारे पैनल के साथ। जॉइनिंग अस अगेन मिस रुशान अब्बास, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कैंपेन फॉर उइगर्स, एंड मिस्टर सुखीचाल, CEO and founder of Punjab Foundation. Welcome back to you both. Ms. Abbas, coming back a little bit to what is taking place, the kinds of human rights violations, the kind of modern day slavery that you mentioned. You talked about this diaspora of Uyghurs that live abroad, almost 1 million you said, and amongst them several family members, each person can identify as missing, as maybe being wrapped up in these so-called vocational camps, as said by the Chinese Communist Party. Ms. Abbas, in your opinion, why do you think this is taking place? Well, China's strategy of building a new Silk Road with a Belt and Road initiative is basically causing the destruction in our homeland. And basically China's dream for the global domination, and what's happening to Hong Kong and what's happening to Tibetans in Tibet, and what happened in our homeland. And look what just happened in India. All these are China's basically undermining the rule of law. There's no decency for the world order or respect for humanity. And basically the Chinese nationalistic, the chauvinistic nationalism against all its neighbors right now. China is using the power of the Belt and Road Initiative and the debt trap diplomacy, lending the money to countries knowing that they cannot pay back, and not only silencing their voice, but buying their votes on whatever they do. They're getting away with it. And also the manipulation in the United Nations as the second largest donor. Therefore, what's happening in East Turkestan today is not just something only concerns the Uyghurs. It also concerns the future of the world. The China's waging war against Islam is not just staying with Islam. They are waging war against all religions, to Buddhism, to Christianity, for Catholics and the Tibetan monks, and anybody who believes an original thought or a power beyond ourselves is threat to communism, atheist ideology. So
the Chinese government looks at last century as a century of humiliation, and they prepare themselves for retaliation in this century. They call this the century for China to retaliate. Retaliate against who? Basically, retaliate against anybody who respects the human dignity, the rights, basic rights of the people that God gave us. Therefore, anybody who is supporting China right now, who is signing up for Belt and Road Initiative, who are continuing to do business with China as business as usual, should think twice, because whatever is happening to Uyghur people today will be there tomorrow. Just look at Pakistan. Pakistan is becoming like a province for China. China's already influencing everything what's happening in Pakistan. And look at here in America. Look at NBA. Look at Hollywood. Where are the vocalist activists in Hollywood? And look at Richard Gere. Mr. Gere supports human rights in Tibet. Just because of that, his career ended in Hollywood. And China is basically controlling our freedom of speech here in America. There are so many so-called Americans using our system, our platforms of freedom to defend this evil regime right now. Actually, India today did a couple interviews with me on the panel with this so-called American. He kept defending China, defending China's concentration camps as educating and education, this and that, and accusing me and the Dr. Adrian Zhang with the Chinese narratives. He's being mouthpiece for China. You know why? Because these people are selling their soul for Chinese money. They are not realizing what they're selling today. If it's just their soul or their voice, tomorrow is the future of the world, the freedom of the world. मिस्टर सुखीचाल, आप काफ़ी वोकल रह चुके हैं जहाँ पे चाइना की स्ट्रॉन्ग आर्मिंग की बात आती है, ख़ास करके जो रिसेंटली चाइना इंडिया बॉर्डर पे काफ़ी डिस्प्यूट्स, काफ़ी स्कर्मिशेस हुई हैं। आप मिस अब्बास के कमेंट्स के साथ सहमति रखते हो? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान के बारे में भी बात कर रही है। देखो, पाकिस्तान को आज जो चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो 40 to 50 बिलियन डॉलर वो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है। कल उनको वो किस्त भी नहीं मोड़ सकते तो क्या करेंगे? वो कैप्चर करेंगे उनको सारे का सारा जो आज का जो इनका इलाका वो कैप्चर कर सकते हैं, कल को सारे पाकिस्तान का भी करेंगे। अगर पाकिस्तान का करेंगे, कल को नेक्स्ट वो पंजाब की तरफ भी आएंगे। इसलिए ये कहीं रुकने वाले नहीं है। जो इकोनॉमिक जो उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको यूज कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का उनके हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी मायना नहीं है। इसीलिए लोगों को मारना, उनको सप्रेस करना आजकल के हालातों में, और उसके ऊपर पर्दा डालना, ये बिल्कुल डिनाई करना जहाँ कोई ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है, दिस इज वेरी डेंजरस। वहाँ इतने लोगों का, ये देखो इनकी कम्युनिटी का, ईगर कम्युनिटी का जो बर्थ रेट है ना, आई थिंक ऑलमोस्ट 40 to 50%, वो कहते भी कम हो गया। वो कहते भी इनकी जो कम्युनिटी है ना, ईगर कम्युनिटी है, उसको बिल्कुल एरेडिकेट, उसको कल्चर को एरेडिकेट करना है, उसको खत्म करना है, उसको लोगों को खत्म करना है। इसलिए चाइना को उस खित्ते में, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस ये भी ज्यादा है, जो इनका जो इलाका है काजाकिस्तान का, वहाँ बहुत ज्यादा माइनरल रिसोर्सेज है, ऑयल है, गैस है, इट्स ऑसम, लाइक ट्रिलियन ऑफ डॉलर। नॉट ओनली गेटवे है, वहाँ बहुत ज्यादा उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है चाइना ने। इसलिए चाइना को अगर आज ये इलाका है, कल को कोई मुल्क होएगा, इसलिए सारे मुल्कों को इकट्ठे होकर जो भी हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास पहले भी जो ज्यूश के साथ हुआ, उस समय मीडिया ज्यादा पॉपुलर नहीं था, मीडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था।
आज तो हम देख रहे हैं, देख कर भी सारा कुछ इग्नोर करेंगे। आज ये वीगर हैं, कल हम भी हो सकते हैं। जी, Ms. Abbas, Mr. Chahal kind of transitioned into what's being done and what, more importantly, needs to be done to address this issue on a world stage and hold the Chinese government accountable for their actions. In your capacity as the founder and executive director of the nonprofit Campaign for Uyghurs, tell us what this organization is doing and what kind of support you're looking for, both on an individual and an organizational level today. Campaign for Uyghurs was established in 2017, end of 2017, to raise awareness on this current atrocity and also work with grassroots organizations, fight against China's disinformation and the false narratives, and to tell the world community actually what's happening. Now we have a very great team working day and night, trying to work with as many as grassroots organizations and universities and youth and the interface organizations. Our website, campaignforuyghurs.org, has some recommendations and action items, and also the report that I mentioned, that the genocide report we prepared, it contains actual specific recommendations to address the current atrocities. And I cannot emphasize enough, no action should be considered too radical as we confront this genocidal regime. And we do have like a specific action items for the European Parliament or United States government, which today we just heard the United States government sanctioning for Chinese criminals, basically, who are responsible for those atrocities. And and we also would like to have basically, we need to move to address of the individuals, corporations, and the governments, universities, and the international bodies like United Nations. We must address Chinese Communist Party's manipulation and control in our democratic systems. And also all of the humanity in the world, which Chinese government is doing currently. They are trying to control everybody. Mm-hmm. We have to end that. And also we should move to address the failure of some of the organizations, such as the International Olympic Committee, mm-hmm. and the Organization for Islamic Cooperation. Mm-hmm. Look at it, it's not just that the world is muted and not doing any tangible actions. They are complicit and they are rewarding China, actually. Look at it. The China is given the right to host Beijing Olympic 2022. What happened to the principles of the International Olympic Committee? What is Olympic Games at the first place? Olympic Games are the whole world community coming together under the name of the Olympic Games from different religion, different background, different race. The country holding more than 3 million people in the concentration camps and sending millions more to work as slaves because of their race, because of their ethnic identity, is the last country to able to qualify to host such a prestigious games. And also the resultant report should be transferred to the International Court of Justice without delay. We are looking for any kind of legal help, like if there's any pro bono attorneys can help us file our case against the Chinese government. And also, I cannot emphasize enough, this is not just the calamity of the Uyghurs. It's a test for humanity. Mm-hmm. It's a test for everybody's conscience.
Absolutely. So as China continues to push their limits of what atrocities they can get away with, these civilized nations of the world must defeat with a common enemy, which is in this case the worldview of the Chinese regime that justifies the use of concentration camps and slavery, making this acceptable and even being rewarded behavior of the modern age. Miss Rushan Abbas, you've given us a lot of very specific, very important action items. I do want to once again reiterate those for our viewers in language. We're going to stop for another quick break here. Both of you stick with us. We'll be right back after the break. Welcome back from the break. बात हो रही है the human rights violations taking place against the Uyghur population in China currently, जहाँ पे 11 मिलियन के करीब Uyghurs रहते थे ईस्ट तुर्किस्तान की रीजन में, अब at least 1 million US State Department estimates are being detained against their will in concentration camps under the slogan of education. To discuss this further, हमें एक बार फिर हमारा panel join कर रहा है Mr. Sukhi Chal, founder of the Punjab Foundation, and Ms. Rushan Abbas, who has both been personally affected by this. Your sister is missing for almost 2 years. Your husband's entire family in East Turkestan is still missing. Ms. Abbas, you walked us through the very dire, very frankly horrendous reality of the ground in East Turkestan that's taking place. You also walked us through what can be done about this. Your foundation, Campaign for Uyghurs, is working both at the political and the social level to not just bring awareness around this, but to have actual action being taken in place. Mr. Chal, I'd like to go to you. You work very closely with various governments, with various elected officials, specifically when it comes to human rights issues. You're involved with this one as well. आप थोड़ा सा हमारे हिंदी व्यूअर्स को बताइए कि जैसे मिस अब्बास हमें ब्रेक से पहले बता रहे थे, किस तरह का स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए एंड किस तरह की अवेयरनेस सबसे पहले इस इशू को मिलनी चाहिए एट द लोकल लेवल, एक इंडिविजुअल तौर पे यूएसए में रहने वाले, कनाडा में रहने वाले एनआरआईज इस इशू पे क्या कर सकते हैं? अश्मिता जी, सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम चाइना के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम जब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम सारी चाइना को या सारे पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहरा रहे, हम जो उनकी जो चाइनी कम्युनिटी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो हम बहुत सारा अत्याचार कर रही है, क्योंकि इसमें बहुत लोग हैं चाइना में रहने वाले, क्योंकि ये लोग भी चाइना में रहते हैं बेसिकली, अगर देखा रहे देश में उनको भी बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है। देखो पहले जो ताइवान स्केयर में भी कितने ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स को मारा, जो तिब्बत में कितने लोगों को मारा जा रहा है, और हांगकांग में कितनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कर रही है, इस तरह चाइना नहीं कर रहा है। उसके लिए लोगों को पता होना चाहिए, जो बाहर के लोग में रहते हैं, अमेरिका कनाडा में चाइनीज लोग रहते हैं, भी हमारा उनके साथ कोई रंजिश नहीं है, कोई दुख नहीं है। हम तो वो ये उम्मीद करते हैं भी वो भी हमारे जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है उसको कंडेम करना चाहिए, और दैट्स नंबर 1। दूसरी बात आपने पूछा, इसके लिए इससे पहले कोई काम करे, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नो कि उसको पता हो भी इशू क्या है, मुद्दा क्या है, क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो इसको सप्रेस कर रही है। वो कहता है भी नहीं कोई इशू नहीं है वहाँ, तो वो उनको री एजुकेट कर रहे हैं। री एजुकेशन के हिसाब से स्लेव मार्केट अभी न्यूयॉर्क के में लास्ट वीक की न्यूयॉर्क का मैं इंसिडेंट बता देता हूँ। जहाँ न्यूयॉर्क में जो हमारा इनका न्यूयॉर्क का जो यूएस बॉर्डर कंट्रोल पोर्ट था, वहाँ से 8 टन जो लेडीज के ह्यूमन हेयर हैं वो कैप्चर किए हैं, जो वो उन लोगों ने कैप्चर किए हैं वहाँ। वो सारे का सारा 8 टन जो बाल थे, जो हेयर थे, जो जिनके बिग बनते हैं लेडीज के, वो इनके इलाके से आए हुए थे, वुहान से। ये इनके जो
जो वीगर की लेडीज हैं उनके हेयर थे, क्योंकि डीएनए के हिसाब से पता चलता है। नाउ इमेजिन कि 8 टन हेयर उन लोगों के कहाँ से आए। जब भी इन लोगों को लेकर जाते हैं कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जाते हैं लेडीज को, सबसे पहले उनका जो हेयर है वो रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जो भी इनका जो ब्लड सैंपल ले रहे हैं, अभी नहीं ज्यादा, क्योंकि कम्युनिकेशन बाहर नहीं है, बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही वहाँ। इसके लिए उनका जबरदस्ती ऑर्गन मार्केट एक बहुत बड़ी डेवलप होएगी वहाँ। तीसरा होएगा जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो हो रही है, उसके साथ जेनोसाइड हो रहा है। इनका जो बर्थ रेट है लेडीज के साथ, ना जो इनकी पॉपुलेशन बढ़ ना सके, जो धीरे धीरे इनका जो सारा का सारा जो चाइना के कंट्रोल में आ जाए। तो इसलिए जो भी लोग हैं बाहर, जो भी लेते हैं एक्टिविस्ट हैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, सभी को कोशिश करनी चाहिए भी ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज नॉट ओनली, क्योंकि somebody else has to step up। ये हमारी योर एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। They have to go after China, they have to pinpoint, and they have to go to Washington DC, and all the elected people, they have to reach out to them, they have to make sure that these are their voice, we should be their voice। हमें रेज करनी पड़ेगी, क्योंकि आज वो जो आदमी मजबूर है, जो पकड़ा है, जिसको जेल में डाल दिया, वो नहीं कुछ कर सकता। अगर कुछ बोलते हैं तो उनको बाकी को भी जेल में डाल देगा, लेकिन हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं। इसके साथ ही जो मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट में एक जो हमें टच करता है, सिख कम्युनिटी को टच करता है, इसके साथ ही मैं एक बात बोलूं, बहुत लोग होते हैं जाने में अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन गलती करती हैं। जैसे हमारी भी एक कोई जहाँ लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आजकल चाइना के काफी प्रो चाइना बात कर रही है अमेरिका में रहकर। ये उनका जो एजेंडा है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि चाइना अगर इन लोगों का अपने लोगों का नहीं सका हो सका ना, तो सिखों का कभी सका नहीं होएगा। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या आजकल कोई ये चाइना की सपोर्ट कर रही है, इट मीन्स वो डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहाँ हो रही है, उसकी भी सपोर्ट कर रही है। जो जेनोसाइड हो रहा है उसका भी सपोर्ट कर रही है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी जो सप्रेशन की सपोर्ट कर रही है। जो इनकी लेडीज के साथ, मिलियंस ऑफ लेडी के साथ एवरी डे स्टेट स्पॉन्सर्ड जो रेप्स हो रहे हैं, उनकी भी वो सपोर्ट कर रही है। इसीलिए वी हैव टू सी एक्चुअली को चाइना के बारे में। सुखी जी, हाँ जी, सुखी जी, आप सीधे शब्दों में कह सकते हो कि अगर आज की डेट में, जैसे मिस अब्बास ने पहले कहा, कोई चाइना को सपोर्ट कर रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? देखो, इकोनॉमिक रीजन है ज्यादा, सबसे ज्यादा, क्योंकि इनके पास, चाइना के पास इकोनॉमिक पावर है। बिकॉज लास्ट 20-30 साल से जो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, जो इकोनॉमिक पावर की वजह से वो इकोनॉमिक को यूज करके, जैसे इवन के ब्रिटिश ने इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पहले, उसने भी थोड़े थोड़े लोगों को पैसे दिए, एक दूसरे की सपोर्ट करने की, एक दूसरे के साथ लड़ाने की कोशिश की। जो चाइना इज डूइंग एग्जैक्टली सेम थिंग। जो आपस के जो छोटे छोटे इंडिया के आसपास जो देश हैं, जो उनके आसपास भी देश हैं, उनको पैसे के हिसाब से, फाइनेंशियल पावर के हिसाब से उनको एक लॉन्ग टर्म में उनको एक स्लेव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम, सो आई थिंक if you go back to the history, China is making the one of the biggest blunder in the history। ये सोवियत यूनियन ने भी पहले किया था। जब आपके आले दुआले जो इतने ज्यादा दुश्मन हो जाए ना, एक दिन वो दुश्मन इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपके साथ भी वही होएगा जो आप लोगों के साथ करने की कोशिश कर रहे हो। एंड दैट कैन हैपन। जी, Miss Abbas, unfortunately we don't have too much more time left, but in closing, I want you to let our viewers know, if anybody wants to get involved, what they can do. Your website is being displayed on screen for your nonprofit organization, Campaign for Uyghurs. The time is yours. Just give me a couple of minutes to just make a point here, because the Uyghurs are becoming collateral damage for China's economic aggression, basically. So we must no longer perpetuate the belief that decoupling from China is too costly. What is the cost of human lives? What is the cost of an entire ethnic group of my people, the Uyghur ethnic group? On the contrary, it's too costly to continue to have any kind of cordial relationship with this evil regime, China. So no one can remain free until the Uyghurs become free. Just past last 9 months, 3 sets of leaked Chinese documents became available. Whoever leaked those documents, sacrificing their lives or putting themselves in danger, did so in the hope that
their actions would be a catalyst for significant change. So that should be a wake-up call for to open our eyes. China may buy the corrupted hearts of a man, but they cannot silence all of us. So it's time to act bravely. It's time to stop this Holocaust of my people, because it's not just China stopping with the Uyghurs. Basically, next world order is on our hand. Let's all act bravely and stop this, because we are all responsible for what happens next. Thank you. Thank you. Mr. Sukichal, any closing words? नहीं, जो रुशान जी ने बोला है, मैं 100% इनके साथ सहमत हूँ। देखो, एज ए सिख, जो सिख हमेशा हमारी तो दुनिया का भला सोचते हैं ना, दुनिया के बारे में जुल्म कहीं भी हो रहा है, किसी भी कौम पे हो रहा है, सिखों ने हमेशा उसका साथ दिया है। जो आज इनके साथ भी हो रहा है, जो चाहे हमारे इनके साथ कोई भी रिलेशन हो, किसी भी धर्म को, कोई आदमी है, कोई कम्युनिटी का है, कोई देश का है, एज ए सिख हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है, जो रियल टर्म में जो दिस इज कॉल्ड जेनोसाइड, जो उनका जेनोसाइड हो रहा है, उनका जो फ्यूचर, उनका जो बिल्कुल एरेडिकेशन की जो तैयारी कर रहा है, आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू स्टेप अप। हमारे लोगों का, सभी लोगों का, मैं सभी लोगों को एक बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्लीज ये दिस इज द टाइम, एवरीबॉडी हैज टू स्टेप अप। इवन सारे, सिर्फ नॉट ओनली me as an Indian, everybody, anywhere, everybody actually has to step up actually for this cause. Ji, Suki ji, you say step up, and I really want in closing to let people know what they can do. क्या वो अपने local elected officials को contact कर सकते हैं? क्या वो इस website पे जा सकते हैं? Is there anything specific? Very specific to the point actually. So हर एक, देखो, एक सेनेटर होते हैं, एक इलेक्टेड कांग्रेसमैन होते हैं, वो हमारे यूएस कांग्रेस में जाते हैं। एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज ए लोकल यूएस सिटीजन, मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरे लोकल कांग्रेसमैन को पता होना चाहिए, मेरे सेनेटर को पता होना चाहिए भी उस दुनिया में क्या हो रहा है और उनका प्रतिकर्म उसमें बारे में क्या है। क्योंकि उनकी, अगर उनको जो नहीं बताएंगे, बोलेंगे ना, उनके पास और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होएंगी, वो हमेशा एक बार दब के रह जाती है। अगर उसकी कंस्टिट्यूएंट से उनका प्रेशर बढ़ेगा ना, तो ऑब्वियसली उनको भी जाकर जस्टिफाई करना पड़ेगा, कल को उनको दोबारा इलेक्ट होना है। इसलिए this is a very important for all of us to make sure कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको पता होना चाहिए भी नहीं, जो uyghur के बारे में चाइना में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो रही है, उसमें उनका क्या स्टैंड है, उनको जरूर पूछना चाहिए। जी, thank you so much, Mr. Yep, go ahead. About specific thing, please. There is a currently introduced bill, Uyghur Forced Labor Prevention Act, introduced by Congressman Jim McGovern and the Senator Marco Rubio. Please call your representatives, ask them to sponsor this. We need more voices, more signatures from senators and congressmen. So that's something really crucial to stop this Uyghur slave laborers. Thank you. Thank you so much, Ms. Rushan Abbas, the founder and executive director of Campaign for Uyghurs, also someone who is personally suffering from this human rights violation currently taking place. Thank you for joining us, and of course, thank you, Mr. Sukichal, CEO, founder of Punjab Foundation. We wish you both the best of luck in this initiative. बाकी दर्शकों में बताना चाहती हूँ, अगर आपको इस प्रोग्राम को लेके कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, या अगर आप और जानकारी चाहते हैं इस स्पेसिफिक मसले को लेके, आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। इस टॉपिक पे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। Stay tuned, दिल की ओपन स्टेज coming up live right after this। मुझे आप दो इजाज़त, नमस्कार।